Good evening, everyone. It's a pleasure to be here, and thank you for inviting me. I will be speaking of a topic, which probably, if you ask somebody in your family, somebody in your neighborhood, you will always find somebody afflicted by either an allergy or an asthma. And what makes it worse in today's world, today's time, is pollution. Air pollution is going to impact every one of us. So I'm going to be talking about these topics, and hopefully there will be certain messages which will help every one of us, each one of us. If we have asthma, even if we don't have asthma, we will be helped, hopefully. So what is an allergy? Let's begin with that. Now, allergy क्या होती है? God made our system in such an amazing way. We fight a virus, we fight an infection, we fight a bacteria. We are fighting, constantly fighting certain things, certain bad things in our atmosphere, in our environment. But what happens if the immune system starts fighting certain, not so bad things? Harmless substances. कुछ ऐसी चीजों से लड़ना शुरू कर देते हैं जो शायद हमारे लिए उतनी बुरी नहीं है. क्या पता थोड़ा सा डस्ट है, थोड़ा सा कोई पेट रखा है, कोई बिल्ली रखी है घर पे, उससे हमें एलर्जी हो जाए, उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने लगे, तो प्रॉब्लम होती है. एंड क्या है कि व्हेन द बॉडी मीट्स एन एलर्जन, जब ये एलर्जन हमारे कांटेक्ट में आता है, इट मेक्स केमिकल्स. What is one of these chemicals is the IgE antibody. It is an antibody against this allergen. What this antibody does is कि antibody say it will start binding to cells, and खूब सारे chemical mediators will come out. One of them is histamine. It causes swelling, inflammation. Now, this can happen in any site of my body. Say if it happens to my skin, I will start itching. एक लाल लाल धब्बे बन जाएंगे. If it happens in my nose, नाक से पानी आने लगेगा, छींकें आने लगेंगी. आंखों में ऐसा हो सकता है, आंखों में ऐसा होगा तो आंखों से पानी आने लगेगा, आंखें लाल होने लगेंगी. अगर गले में ऐसा होगा तो गले में खराश आने लगेगी, आवाज बदलने लगेगी. तो जैसे चेंज इन वॉइस, there's a sore throat. And the same if it happens in the airway, lower airway, the trachea and the bronchi, then there is what you call asthma. So asthma, you can think of allergy as a broad umbrella term, which encompasses everything. उसमें स्किन की एलर्जी हो सकती है, नाक की एलर्जी हो सकती है, आंखों की एलर्जी हो सकती है, गले की एलर्जी हो सकती है, पेट की एलर्जी हो सकती है. फॉर दैट मैटर, जब वो सांस की नली में होता है, दैट्स वेयर माय स्पेशलिटी लाइज. जब वो सांस की नली में होता है, वी कॉल इट एन एस्थमा, टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स. सो व्हाट इज एस्थमा? लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ in a little bit detail. And please be aware that asthma किसी भी उम्र में हो सकता है. It can occur at any age. Many people think कि सिर्फ बच्चों में होता है, and as you become old, it disappears. May happen, may not happen. ऐसा भी हो सकता है कि आप at the age of 50 can develop asthma. At the age of 60, you can start developing asthma. So it can happen at any age. Sometimes it starts as a child, sometimes it starts when you're an adult. And you can have a family member. And by the way, if your family member has it, chances are that you're at a higher risk of developing it. So let's now basically बात करते हैं in a very simple term. What are the airways? Airways एक नली है, सांस की नली है जिससे हवा अंदर जाती है. लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना. इसके लिए हमेशा एक एनवायरनमेंट से हमें एयर को अंदर लेना है, अंदर, और एयर को बाहर निकालना है. तो ये जो कंडक्टिंग एयरवेज होते हैं, ये वो रास्ता है जिससे सांस, हवा अंदर जाती है फेफड़ों तक. एंड अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड आपको एक नॉर्मल हेल्दी एयरवे दिख रहा है, जिसका ल्यूमन खुला हुआ है, जिसकी नली खुली हुई है, कोई सूजन नहीं है, और आसपास ये थोड़ी मांसपेशियां हैं जो रिलैक्स्ड है, कंस्ट्रिक्ट नहीं की हुई. तो इससे हवा आराम से अंदर जा सकती है, आराम से बाहर आ सकती है. दीज आर दी हेल्दी एयरवेज. देन आप राइट साइड में अगर देखोगे तो देयर इज एन एयरवे जिसमें बहुत सूजन है. जो ये मांसपेशियां थी, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स थे, ये सब कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं, बिल्कुल बंद हो गया, सांस की नली को बंद कर रहे हैं. साथ ही साथ ह्यूमन में भी जो अंदर का ये रास्ता है, उसके अंदर कुछ बलगम फंसी हुई दिख रही है. देयर इज स्प्यूटम विच इज स्टक हियर, एंड देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज. जो वॉल है वो भी सूज गई है, इट इज स्वोलन, इन्फ्लेम्ड. सो ऐसे एयरवेज के थ्रू हवा को अंदर और बाहर जाने में दिक्कत आती है. एंड व्हाट हैपेंस इज, व्हाट द क्लासिकल हिस्ट्री दैट यू विल गेट इज कि देयर इज वीजिंग, सीटिया जैसी आवाज आती है ना, एक ऐसी आवाज आएगी, दिस इज वीजिंग. जब वो हवा उस
कंस्ट्रिक्टेड छोटे से रास्ते से निकलती है तो एक सीटियां सी आवाज आती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आई जस्ट टोल्ड यू दिस, दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलती है, सांस में दिक्कत आती है, कभी कभी सूखी खांसी होती है। एक जो देखा गया है कि कई लोगों में रात में ये दिक्कत ज्यादा होती है या ठंड में ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों में कई बार आप ये भी देखोगे कि दिन में कुछ टाइम बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कुछ टाइम में दिक्कत होगी। ऐसा भी देखोगे साल भर में कुछ महीने बड़े आराम से बीतेंगे और कुछ महीनों में ये दिक्कत होगी। So there is what we call seasonal variation. It varies with the season, and there is diurnal variation, which means it varies with the day. And a very classical feature is कि night में nocturnal symptoms ज्यादा होते हैं। फिर wheezing, जैसे मैंने आपको ये आवाज सुनाई, कभी भी सुनो, just tell that person भाई immediately hospital जाना है, आपकी सांस की नली में सूजन होनी शुरू हो गई है, ठीक है, but don't wait for that to develop. And then there is chest pain, that is also a symptom for asthma. So what are the causes? Do realize there are certain things which cause this asthma. जैसे मैंने कहा कि there may be certain allergens and those allergens will trigger the allergy. तो वो dust हो सकता है, वो कुछ हो सकता है. Then there are certain things which will make it worse. Although you are not per se allergic, आपको उससे allergy नहीं है, but उस चीज से आपको ये थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है? So you have pollens, that is an allergen, but something like stress can make it worse. It can make it bad for you. Again, changes in weather, you are not allergic to a change in the weather, but the change in the weather can make it bad for you. And the same is with the topics that we're talking about: pollution, cigarette smoking. These are things, they are not they may not be the proper allergens, they are not the ones which are triggering it, but they will make it worse for you to control your disease. So keep in mind that allergens aren't the only things that can make your allergic asthma worse. There are many things that can make your asthma control really bad, and these we call irritants. They may still trigger an asthma attack even though they don't really cause an allergic reaction. So I probably आप लोगों ने सुना होगा, there's something known as allergy testing. स्किन पे एक वो छोटा सा एलर्जन देख के देखते हैं कि टेस्टिंग से रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो आप हो सकता है आपको एलर्जी हो पोलन से, बट जब मौसम बदले, शायद वो पोलन ना भी हो, बट क्योंकि वो मौसम बदला, ठंडी हवा थी, उसके वजह से सांस की नली में सूजन आ जाए, या वातावरण में प्रदूषण इतना ज्यादा हो, इतना धुआं हो कि उसकी वजह से सांस की नली में सूजन आ जाए। तो स्मोक, एंड खासकर सिगरेट का स्मोक इन एनी वे, एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, केमिकल फ्यूम्स। कईयों को एलर्जी नहीं होती परफ्यूम से, लेकिन जब वो परफ्यूम सुनते हैं, उनके परफ्यूम सूंघते हैं सारे, तो उनकी नाक से पानी आने लगता है या छींकें आने लगती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड डस्टी रूम्स, अगर एक रूम में डस्ट है तो भी ये हो सकता है। तो क्या किया जा सकता है? आपको अगर एस्थमा है या आपके किसी परिवार वाले को है या somebody in your neighborhood, किसी को भी आप जिसको जानते हो अगर एस्थमा है, तो क्या क्या किया जाना चाहिए उनको? पहली चीज तो खाना बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। This sounds like a very dragged out story, but it is a very important thing. अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। एंड द अदर थिंग दैट देखा गया, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, कि अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपके लिए अच्छा होता है। नाउ दिस साउंड्स थोड़ा अजीब लगता है कई लोगों को ये सुनने में कि जी सांस फूल नहीं रही और आपको हमसे एक्सरसाइज करने को कह रहे हो। जब आपकी सांस फूल रही है, जब आपको अटैक आया है एस्थमा का, तब नहीं एक्सरसाइज, बट रेगुलरली अपना फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखिए। हमारी एडवाइस रहती है कि हर हफ्ते में 150 मिनट्स हो, तो हर दिन, हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन भी अगर आप 30 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एंड लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। And again, do things that make you feel happy, that keep you relaxed. That is going to be very important for you to control your asthma. As I said, stress is a trigger. अगर आपका स्ट्रेस आप अवॉइड कर पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Then exercise. Again, this is a repetition, but exercise is good for you. There are a lot of ways to keep fit. And जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, and I am repeating this point, अगर आपको सांस फूलती है तो आप इनहेलर लीजिए, ठीक है? अगर आपको अटैक है तो उस वक्त आपको दौड़ना नहीं है, बट जब आपको अटैक्स नहीं पड़ रहे, जब आपका एस्थमा कंट्रोल में है, तब आप अपना नॉर्मल लाइफ लीड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करा करिए। And what if exercise makes your asthma worse? Then you talk to your doctor before starting this exercise.
कुछ लोगों के लिए ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज कैन मेक एस्थमा वर्स, but that does not mean that you stop exercising. It just means you do it with a few precautions. Few precautions matlab you can take an inhaler and then go for your exercise. So there is a reliever inhaler जिसको हम कह सकते हैं कि आप 15 मिनट पहले एक्सरसाइज करने से 15 मिनट पहले आप ले सकते हो, एंड अगर आपने वो लेके एक्सरसाइज करोगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी क्योंकि सांस की नली को हम खुला रखते हैं. ठीक है. Yoga is something which is very Indian, and it is something which we have taught the world. So I know many people abroad who do yoga, and it is a gentle stretching where your body is put in different positions. It is not strenuous exercise. हर कोई कर सकता है, and it gives you good control over your breathing. So that's a very important exercise that actually every one of us can do. Another thing that I would always tell my patients, and मतलब सब पेशेंट्स चाहे उनको एस्थमा हो नहीं हो, चाहे आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हो, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. आई मीन पैकेट्स में भी लिखा हुआ होता है बट लोग पढ़ते नहीं है. स्मोकिंग इज बैड, एंड ऐसा भी होता है कि शायद आपको उस वक्त ना लगे, बट जो आप धुआं बाहर निकाल रहे हैं, जो दूसरा बंदा उसको इनहेल करेगा, उसको उसके दुष्प्रभाव होंगे. So stopping smoking is good, not just for you, not just for the environment, but also for the people around you. आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप स्मोक ना करें, और आपके आसपास अगर कोई कर रहा है प्लीज उसको रोकिए, उसको समझाइए. तो एलर्जेंस को भी रोकना. अब ट्रीटमेंट क्या करें? एक तो है कि हम एलर्जेंस रोक दें, एक है कि हम पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, एंड तीसरा होता है दवाइयाँ. माइंड यू, एज अ डॉक्टर मेरा जो आता है मैं दवाइयों पे करता हूँ, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट, कि हम एलर्जेंस और पोल्यूशन को किसी तरह कंट्रोल में ले आए. अगर हम ऐसा कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ना सिर्फ हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एंड सबके लिए. So let's talk about a couple of tips that we can do, how to control this allergy. One is, well, find out कि आपको एलर्जी किस चीज से है. कईयों में देखा गया है कि जब मौसम बदलता है, जब फ्लावर्स वो होते हैं, पोलन से अगर है तो सिंपल है, पोलन्स को अवॉइड करिए. अगर ऐसे स्टॉप उस पार्क में मत जाइए जहाँ पे खूब सारे वो हैं, या ऐसे ऐसे पौधे अपने घर पे मत रखिए जिसके पोलन से आपको इतनी दिक्कत होती है. The other thing is avoid dust mites. Now dust mites, हम सोचते हैं dust mite is actually an organism. It is a एक तरीका कीड़ा है जो डस्ट में रहता है. एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब डस्ट बैठा हुआ है ना, ये कीड़ा उसमें चल रहा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. लेकिन जब आप डस्टिंग करते हो और वो धूल उड़ती है, दैट इज व्हेन इट कॉजेज अ प्रॉब्लम. तो इनफैक्ट कई पेशेंट्स दिवाली क्लीनिंग के वक्त घर में वाइट वॉशिंग होती है. वी एक्चुअली टेल आवर पेशेंट्स कि ऐसा अगर हो रहा है, अगर आपके घर पे सफाई हो रही है और बहुत धूल उड़ने वाली है, तो प्लीज गो एंड ईदर मूव टू अ डिफरेंट हाउस और अ डिफरेंट फ्लोर. बट वो डस्ट को अवॉइड करना बहुत जरूरी है. एंड ये डस्ट माइट प्रॉब्लम भी तब करता है जब वो धूल उड़ रही होती है. अगर आप कैसे अलमारी के ऊपर थोड़ा सा धूल बैठी हुई है, वो शायद उतनी प्रॉब्लम ना करे, बट अगर आप उसको डस्ट करके उड़ाने लगोगे तो कईयों को अटैक्स होने शुरू होते हैं. तो इसके लिए घर पे कई लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई दिवाली की सफाई होनी है, हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं, करते रहना. बट जोक्स असाइड, दे हैव टू अपने आप को डस्ट से बचाना बहुत जरूरी है. दूसरा है कंट्रोल इंडोर ह्यूमिडिटी. अगर घर का वातावरण, कई बार हमारे पास मॉडर्न हाउसेस इट इज़ वेरी इजी कि हम ह्यूमिडिटी, फैन, टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बहुत ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे जो फंगस होता है वो उग सकता है. इनफैक्ट आपने देखा होगा कुछ पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, दीवार पे काला सा एक फंगस या लग जाता है जिसमें मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो और डैम्प हो. अगर थोड़ा सा वेट होता है, दीवार कभी वेट हो जाती है बारिश के बाद, यू विल ऑब्जर्व कि 1-2 महीने बाद वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सी लेयर आ जाती है, छोटे छोटे डॉट से दिखने लगते हैं. दैट इज अ फंगस विच इज ग्रोइंग देयर. एंड दीज फंजाई कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ. तो ज़रूरी होता है कि उसको हटाएं, घर पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रखें. ज़्यादा रखोगे तो फंगस उगने का रिस्क होता है. ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना, एक लेवल पे रखना चाहिए. देन कईयों के ऐसी भी हिस्ट्रीज हमने देखी हैं दैट बिल्कुल ठीक थे, बट सडनली कई फैमिली में 3-4 लोगों को दिक्कतें आनी शुरू होती हैं. तो भी जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि एक घर पे एक बिल्ली आने लगी थी, या किसी ने पिजन्स को खाना देना शुरू किया, या कोई डॉग नया रखा,
उससे ये हो सकता है. It is very difficult for many people कि वो अपने पेट से डिटैच कर पाए, but there are few things that can be done. If you can leave the dog out at least during the night or keep them away, and अगर उनके डॉग से डील कर रहे हैं या कैट से डील कर रहे हैं तो मास्क पहने. So there are certain things, and if possible, get a different pet. I know those who are emotionally attached to their pets will never agree to it, but this is a kind of advice allergen avoidance के लिए जो हम कभी कभी देते हैं. Another thing is uh, a common allergen that we see in India is actually a cockroach. Cockroach का जो dust होता है, the feces of it also has a lot of antigen, cockroach antigen. तो ऐसा अगर आपका bathroom and kitchen clean है, it's free of pests, it is free of cockroaches, it's free of just all pests actually, the chances of you developing an allergy to that antigen comes down. I know it is, we may all think कि हमारा is very clean and वो है. Let me tell you, there is evidence to show that जो सबसे clean houses में थे, उनमें भी cockroaches and वो somehow are found. Because नालियों के अंदर there are certain neglected areas जहाँ पे they still persist. So it's easier said than done, but it should still be done. Now, another thing that is often talked about is air filters, and I can speak for an hour about it. There's a lot of controversy in it, but एक चीज मैंने ये भी नोटिस किया कि कई लोग एयर फिल्टर्स, अपने एसी का जो एयर फिल्टर होता है उसको भी साफ नहीं करते. Ideally, it should be cleaned regularly so that there is no buildup of dust there. But होता यह है कि महीने एक जब एसी चलना होता है उसे एक दो दिन पहले साफ किया एंड उसके बाद कोई मंथ्स उसको बिल्कुल साफ नहीं किया. दैट इज नॉट नाइस. एंड द सेम थिंग हैपेंस विद कार्स में भी जो एसीज होते हैं, द फिल्टर्स हैव टू बी क्लीन्ड रेगुलरली. Another thing is air purifiers भी many people use, but they never change the purifier का filter. So if you used an air purifier for months and months and never changed it, never cleaned the filter, well then you've just been inhaling all the bad air. Then other thing is, मान लीजिए आपके पास एक गार्डन है और आपको पता है कि इस सीजन में एक ये फूल आ रहा है जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो सकती है. Then be careful when you're working outside, when you're working in a garden. Avoid करिए उस एलर्जन को if you get to know about it. Now, air pollution is another topic that I really wanted to discuss. ये महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो what to do? Air pollution क्या है, कैसे होगा, क्या problems होगी? So one thing I want is, everybody has a smartphone. Smartphone में you always get an AQI. AQI written here कि आज temperature ये है and your AQI here is currently this much. You'll find it in your smartphones. It's not a big deal. What it tells you, like AQI right now for Delhi is 135. Bad. So let's come to this. What does this 135 mean to us? This is, you have multiple apps available up. Just monitor your AQI, see what the AQI is, and AQI will give you what it means is air quality index. It tells you how good or how bad the air is. So there are certain things that are criteria pollutants जिसको हम specifically नापते हैं. So there is PM10, PM2.5, nitrogen oxide, ozone, carbon monoxide. These सब are regularly monitored by the health agencies. And उसके बाद में we get the data कि आज levels इतने थे, last 24 hours में levels इतने थे, या last 8 hours में levels इतने थे. Let's look at it a little carefully. So there's an air quality index for particulate matter, and we have it. Then sensitive groups get affected. Then the unhealthy, very unhealthy. And there are levels of 301 to 500, which is hazardous. This is data from the United States, but somehow everywhere AQI को हम ऐसे ही करते हैं. But if you remember, there are times, Delhi का मैं आपको बता रहा हूँ, I live in Delhi. There are times when AQI in Delhi was 800 or 900. Such levels are not heard of. Hazardous is 500. 301 to 500 is hazardous. So what do you call a level of 800? Super hazardous. So that is the bad air that we are living with, and this has an impact on us. So air quality index अगर आपको दिखता है, like I showed you on my phone right now, live आपको बता रहा हूँ, air AQI is 135. What does it mean for me? Well, if it was 0 to 50, it is good. There is no risk. It is perfect. I mean, जब हम vacations के लिए जाते हैं to a hill station or to a less crowded place, this is the type of air we are looking for. But what about levels of 51 to 100? That is moderate concern.
It is acceptable, but it is not ideal. Okay. Now 101 to 150. This is where we are right now. In Delhi right now, it is 135. So for a sensitive group, what do I mean by a sensitive group? The elderly, the children, and patients, who have an asthma or an allergy, जिनमें बुरे उनका बुरे असर ज्यादा जल्दी दिखेंगे, ऐसे ग्रुप्स के लिए this is unhealthy for sensitive groups. General public not likely affected. So assuming that I'm healthy, I can go out. But for those who are having some respiratory disease, they have to be a little careful now. And mind you, ये air हम 24 घंटे breathe करने वाले हैं. Then levels come to 151 to 200. That is unhealthy. And it's going to affect everyone, not just the susceptible, everyone. 200 to 201 to 300, very unhealthy. And some may experience serious effects. Serious effects includes even heart attacks have been reported because of this. And hazardous levels, so it's like an emergency condition. 301 to 500 is hazardous, emergency condition. US ka data suggests that this happens when there is a forest fire there. India may, during Diwali, we see levels above 500. It is that bad. It is like living in the midst of a forest fire. It is worse than hazardous. It is an emergency condition, and everybody, not just the government, but everybody has to take an attempt to somehow control this air pollution. So this is a good slide that I had, so that's why I put it up here. Try to look at where we are and what needs to be done. So there are 3 columns here. The good first column is your air quality index, but the second one tells me who needs to be concerned. When it is good, it is a great day to be active outside, right? But once it becomes moderate, some people who may be unusually sensitive to particle pollution may get affected. And that means these patients should consider reducing prolonged or heavy exertion, right? But for everyone else, it is okay to be active outside, which means they can go for a walk, they can, do their regular activities outside. But for those who have to go outside, they should go for a shortest duration possible if they are sensitive people. When it is unhealthy for sensitive groups, that is from a range of 101 to 150, that's where we are right now. Sensitive group includes people with heart and lung disease, older adults, children, and teenagers. So mind you, this is the thing we are living in. We have to tell our teenage children not to go out and play, because AQI is 138 right now in Delhi. In the sensitive group, they are advised to reduce prolonged or heavy exertion. People with asthma should follow their asthma action plans. And if you have a heart disease, you should actually contact your healthcare providers. They can get worse if you go out with this. So this is again a problem. Most of my patients are asthma patients or have a respiratory disease, and most of them even have heart diseases. So what do we tell them? We have to tell them, be very careful now. Once it becomes 151 to 200, it is for everyone to get worried about. Not just because I'm healthy, I cannot say, oh, I should not be worried. It is important for me to worry about this. For sensitive groups, we advise avoid prolonged or heavy exertion. Everyone else, we ask them to reduce prolonged or heavy exertion. Once it becomes unhealthy, 201 to 300, again, sensitive groups avoid all physical activity outdoors. Everyone else avoid prolonged or heavy exertion outdoors. And once it becomes hazardous, everyone is to avoid all physical activities. And the sensitive group, they specifically have to remain indoors and keep activity levels low. And one of the advice that is given is not to take even a deep breath. But for how long can one do that? This is, how we are assessing the air quality. Now, what happens if we are not able to control this, or if, despite knowing that the air quality is bad or there is a lot of pollution at our workplace, we still have to go there. What happens is there are short-term effects and there are long-term effects. Short-term, we see them in a matter of hours, probably in a day. You'll see a lot of exacerbations of asthma. कईयों का जिनका asthma है वो बिगड़ जाता है, कईयों को खांसी में दिक्कत आनी है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है. So episodes of high air pollution increase respiratory and cardiovascular hospital admissions and mortality. This is known. In fact, every time we have during Diwali season or when there is crop burning,
Delhi mein there is a lot of air pollution, and we in our OPD we find that suddenly the number of cases who are coming to our OPD increase. That's because of air pollution. We have an indirect evidence कि yes, this is because of air pollution. And what are the long term effects? It's not कि बस थोड़े दिनों दिक्कत करता है और उसके बाद ठीक हो जाता है. It's if you've been exposed to bad air for a very long time, it increases the risk of stroke, lung cancer, and cardiovascular disease, which includes an heart attack. हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर आपने काफी दिनों तक गंदे वातावरण जिसमें प्रदूषित वातावरण में रहे होंगे. तो इल इफेक्ट्स कैंसर हो सकता है, किडनी लिवर डैमेज, स्किन में दिक्कत करता है, बच्चों में प्रॉब्लम करता है, ब्रेन डैमेज करता है, गले में खराश करता है, बर्थ डिफेक्ट्स प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए देयर आर मल्टीपल एविडेंस which shows that it is really bad. And asthma bronchitis so is like we are used to it now. So if you look at the air pollution, 7 million people die every year from air pollution. And this is really scary. हम कोविड से डर रहे हैं, ठीक है, डरना भी चाहिए. It is not to be taken lightly. But so many people are actually dying of air pollution. हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए. So एक चीज याद रखिए, air pollution can worsen asthma symptoms. And asthma sufferers have to be beware if the big city, if there is a lot of air pollution. ठीक है. So what are the things that we can do to reduce air pollution? Well, there are multiple things. There are certain things जो एक government level पे होगा, कुछ चीजें जो हम अपने level पे कर सकते हैं. We should avoid burning leaves, branches. I have a small terrace garden. Uske leaves I send it for composting, and rather than burning them. And then we can we can use more of public transport, less of our own personal cars. We can stop smoking. That is definitely there. Then for the government, it is, we can, I went to Maharashtra recently. I saw they were using windmills there. It's very nice. There are certain solar parks which have come up. So rather than relying on thermal energy, we can rely on other forms of energy, solar energy, wind energy. We can even rely on hydro energy rather than relying on thermal energy. Then there are these things that you can do, as I said, use public transport rather than your own vehicle. If you are using a vehicle, have good maintenance, because after a while the vehicle starts polluting. So if you maintain your vehicle very well, it will reduce the pollution. Even factories may, you can think of techniques of how to reduce, think about it, and there are certain measures that can be taken. So tips to avoid the ill effects of air pollution. These are certain things that we advise our people to do. First of all, abhi tak I was saying exercise. Asthma mein exercise is very good, but I have to tell you, don't exercise outdoors if the air quality is bad. That is why I actually said yoga. Yoga you can do within the confines of your home, in your drawing room or in your living room, or sorry, in your bedroom. Ek yoga mat bichha ke you can do that. But don't exercise outdoors if the outdoor air quality is horrible. Okay. Then on high air pollution days, reduce time spent outdoors, especially doing strenuous activities. Like I go for a jog every day in the park. So when I go there, mask pehnta hu, but once I'm jogging, I actually realize this. I'm breathing at a very fast rate. I'm taking very deep breaths, and if the air quality is bad, I'm doing more damage to myself. So there are other things that you can do. घर पे बैठे भी exercise की जा सकती है. Keep medications on hand. खासकर जो asthma हैं, we give them a reliever inhaler, Astelin or Diolin, and we tell them कभी भी सांस फूले ये inhaler ले लेना. Which means if they are going out, या air pollution के वक्त air pollution है लेकिन फिर भी बाहर तो जाना ही पड़ता है. अगर वो बाहर जा रहे हैं, they should carry their inhaler with them. And कभी भी सांस फूले immediately 2 puff ले लिए. Stay hydrated, breathe through the nose. अगर आप नाक के द्वारा सांस लेते हैं, if you breathe through the nose, वहाँ पे small hair होता है which filters out the dust and it humidifies it. जो air होती है वो dry नहीं होती. By the time it reaches your lungs, by the time it reaches the trachea and the bronchi, जहाँ पे spasm का risk होता है, if the air is humid, अगर उसका temperature अच्छा है, तो वो bronchospasm को prevent कर देगा. Another thing very important for every asthma patient is to know your asthma triggers. अगर आपको पता चल जाए किस चीज से हो रहा है, आपको वो अवॉइड करना सारा सिंपल होता है. एंड एक चीज और हम एडवाइस करते हैं, खासकर ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन, इज
asthma patients को we teach them what is a self management plan, self asthma action plan, which means अगर उनको सांस फूल रही है तो इमीडिएटली इनहेलर लेना सीख जाए. अगर उनकी सांस इनहेलर लेने से कंट्रोल नहीं हो रही तो इमीडिएट हॉस्पिटल आ जाए. कितने में उनकी सांस फूल रही है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो उनको रिकग्नाइज करना सिखाना होता है. एंड कई लोग सीख जाते हैं, दे डू इट वेरी वेल. कुछ जिनको जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं वो इनफैक्ट एक वाइसलोन की गोली भी ले लेते हैं, वो अपना पंप भी ले लेते हैं, एंड बाय द टाइम दे रीच द हॉस्पिटल दे आर स्टेबल. सो वी टीच दीज, एंड खासकर इन पेशेंट्स जिनका बहुत ही सडन एस्थमा अटैक्स हो रहे होते हैं, उनको ये चीज़ें सिखानी होती है. सो टीचिंग अ पेशेंट हाउ टू ट्रैक योर एस्थमा, हाउ टू recognize early signs is a very important thing. Again, for a public lecture this is not important, but uh, for my patients this is a very life saving technique actually at times. So अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, एंड सिंस दिस इज अ पब्लिक लेक्चर, या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी दिक्कत हो रही है, या आपके आस पड़ोस में किसी को ऐसी दिक्कत हो रही है, या आपके घर में किसी को ऐसी दिक्कत हो रही है, प्लीज आस्क देम कि वो आके जाएं अपने डॉक्टर से बात करें, ये सब उनको बताएं. एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन डू. कुछ तो है जो आप कर पाओगे, जैसे एलर्जन को अवॉइड किया, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया. जब पोल्यूशन है तो क्या क्या सतर्क रहना है आपको, वो सब आपको चीज़ें सीखनी है. एंड देर आर फ्यू दवाइयाँ जो हमारे पास होती हैं, जो ड्रग्स जो हैं, which can help you control your asthma and your allergies. So now I'm coming to what are the medications that we have. Broadly, this is just to touch on the topic. There दो तरीके की दवाइयाँ हैं. एक तो है कि एस्थमा के अटैक्स ही ना आए, we call them preventer, कि हम you can prevent an asthma attack. Then one is asthma attack हो गया, अब क्या करें? Well, एक ये दवाई है जिससे सांस की नली खुल जाएगी. It is a reliever. So it is to relieve an asthma attack. And एक चीज, अगेन आई हैव दिस फोरम, सो आई एम गोइंग टू से इट हियर. कई लोग इनहेलर से बहुत डरते हैं कि ये इनहेलर अच्छा नहीं होगा, इससे आदत पड़ जाएगी, इससे इसकी लत लग जाती है. I've heard people say this. It is not true. It is not an addiction. If your lungs are weak, तो आपको इनहेलर लेना है. वो दवाई डायरेक्ट फेफड़ों में, सांस की नली में जाती है और वहाँ पे एक्ट करती है, रिलीफ करती है. बाकी दवाइयाँ आप गोली लोगे, वो जाएगा पेट में, जाएगा पेट से आंत में, जाएगा इंटेस्टाइन में, जाएगा वहाँ से अब्जॉर्ब होगा, पूरे शरीर में जाएगा, दिमाग से लेके पैर तक, एंड कुछ साइड इफेक्ट्स करा सकता है. इनहेलर से साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, उसकी डोज बहुत छोटी होती है, वो डायरेक्ट फेफड़ों पे काम करते हैं, एंड उससे कोई नशा नहीं होता. ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने इनहेलर लेना शुरू किया तो वो इनहेलर ही लेते रहते हैं. Those who were put on inhalers had to use it for a lifelong. That's not the inhaler's problem. That is not the inhaler's fault. Inhalers do not cause addiction. It's because the patient had a very weak lung. Now I use these spectacles when I have to see. I'm not addicted to them. But मेरी आंखें कमजोर हैं. That is a fact of life. अगर मैं चश्मे उतार देता हूँ मुझे नहीं दिखता, अगर मैं चश्मे पहनता हूँ मुझे दिखता है. सेम चीज है, अगर आपकी सांस की नली में सूजन है, अगर इनहेलर देने से वो सूजन चली जाती है तो वो काम करेगा. अब अगर आप इनहेलर नहीं लोगे तो वो सूजन वापस आ जाएगी. तो नशा नहीं है, वो एलर्जी नहीं, वो एडिक्शन नहीं है. इट इज जस्ट कि आपको इनहेलर की जरूरत है तो शायद आपको जरूरत लगेगी. बट इट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग अ मेडिसिन जिसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और जिसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी आएगा. If you are having an attack, and if you have if any of these things happen, you need to use a blue inhaler. Blue inhaler is the reliever inhaler. अगर आपको बार बार वो लेना पड़ रहा है, छाती में थोड़ा टाइटनेस लग रहा है, सांस सांस फूल रही है, साई साई की आवाज फिर से आ रही है, नहीं नहीं बात कर पा रहे, इनफैक्ट कंप्लीट सेंटेंस बोलने में ही आपकी सांस फूल जाती है, ये सब लक्षण है कि आपका अस्थमा अटैक हो रहा है. आपको तुरंत अपना इनहेलर, रिलीवर इनहेलर लेना है. रिलीवर इनहेलर से आपकी सांस की नली खुलेगी. तुरंत आपको, अगर वो नहीं ठीक होता थोड़ी देर में, तुरंत अस्पताल जाना है. अगर अस्पताल बहुत दूर है तो आप अपने डॉक्टर से ऐसी दवाइयाँ भी मांग सकते हैं जो आपको कहें कि आप घर में ये दवाई लेके फिर अस्पताल के लिए शुरू करें. So relievers are inhalers that are usually blue. That is a universal code कि the Asthalin inhaler, अगर आप किसी को जानते हो वो Asthalin यूज करता है, it is a blue inhaler. You take it when your asthma feels bad. थोड़ी देर आप लोगे तो वो immediately effect आएगा, आप you will start feeling better. But अगर आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है ना, it means you should go to your doctor. Preventer inhalers can be of different colors, brown colors, pink colors, कई उसमें आते हैं. They have to be taken every day. अगेन ये एक प्रॉब्लम होती है कि लोग सोचते हैं जब सांस फूल नहीं रही तो क्यों लेना. प्रिवेंशन मीन्स कि यू टेकिंग इट टू प्रिवेंट एन एस्थमा अटैक. आप क्यों चाहते हो कि आपको एक एस्थमा अटैक हो उसके बाद ही मैं दवाई लूँ. सो द आइडिया बिहाइंड अ प्रिवेंटर इनहेलर इज यू टेक इट सो दैट यू डू नॉट हैव एन एस्थमा अटैक. जो सांस की नली में जो सूजन है
जो IgE बढ़ रहा है, जो एलर्जन का रिएक्शन हो रहा है, ये सब उसको शांत कर देता है, सूजन को कम कर देता है। तो आपका जो म्यूकस है, या जो आपका जो जो मांसपेशियां हैं, जो सांस की नली के अराउंड मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स, वो नहीं काम करेंगी। And if your asthma is well managed, you should hardly get any symptoms or even none at all. So हमारा आइडियल टारगेट ये होता है कि जब भी हम किसी मरीज को ठीक करें, जब भी हम उनका इलाज करें, तो हम उनको बिल्कुल नॉर्मल कर दें कि देयर इज नो सिम्टम्स। इनफैक्ट आप देखोगे देयर आर मेनी एथलीट्स हु हैव एस्थमा, हुज एस्थमा इज सो वेल कंट्रोल्ड कि वो हाई एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रायथलॉन रन कर रहे हैं। इट इज ऑल बिकॉज देयर एस्थमा इज वेल कंट्रोल्ड। सो दिस इज आवर टारगेट फॉर एवरीवन कि अगर हमारे पास कोई मरीज आता है, हम उसका एस्थमा बिल्कुल कंट्रोल कर दें। एंड इसमें बोथ पार्टीज आर इन्वॉल्व, नॉट जस्ट मी। सिर्फ मैं दवाई लिख के आपको ठीक नहीं कर सकता, वो दवाई आपको टाइम से लेनी भी है। एंड इन एडिशन एलर्जेंस अवॉइड करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। सो इट इज अ जॉइंट पार्टिसिपेशन वेर इन both of us have to act, me as a physician, you as a patient, and the family also has to support the patient. And asthma can, it can be so well controlled कि the person will is absolutely normal. So I leave with this line: stand up for clean air. uh, चाहे आपको एस्थमा ना भी हो, ठीक है, आई होप किसी को ना हो, बट अगर आपको नहीं है, फिर भी क्लीन एयर इज समथिंग वी ऑल नीड. सो विद दैट आई विल एंड, and I think let's have question and answers if there are any. Thank you, Dr. Rohit, for the wonderful talk on such a relevant topic. The message is loud and clear that asthma is a condition in which there are variable symptoms which vary during the day, during various seasons. The symptoms can be intermittent, they can be seasonal, they're more likely to be worse at night, not always, but and they can be provoked by either one or more than one triggers. With that in mind, and knowing that it can be well controlled, and the use of inhalers is a targeted drug delivery system with minimal side effects to other body parts other than the lungs where it is needed the most. I think the message and the talk has been outstanding and wonderfully clear. Absolutely. Thank you. There is no doubt. And as you highlighted a very valid point that those who smoke can give up smoking. And in continuation with that, Government of India actually has a big program and has as I'm sure you would also all be aware, that National Tobacco Quit Line, or the M cessation. There's a slide, I think we in the uh, first meeting, first webinar we shared, and I'm sharing that slide again. It cites these. It cites the numbers and the details of the and if one wants to quit tobacco, there is a Government of India helpline. The number is on the screen. Please take note. All you have to do is it'll help you guide, it'll help you give messages, it'll keep you motivated, it'll you can share your challenges, they'll help suggest to you way out. You can get continuous text messages, you can get phone calls, and you can register yourself at this portal of the to get yourself registered for quitting. Help will come, is available, information is available. All you need is perhaps the will to do it and the decision that you want to quit on a particular date. Having said that, there are many conditions which overlap asthma as we know it, and some of them are like chronic obstructive pulmonary disease, and conditions like some conditions are very serious, like that of the left ventricular failure or impending heart failure. So, Dr. Rohit, is there a simple information that can help our patients to understand that this might be chronic obstructive airway disease and not asthma, and it might be
left ventricular failure and not asthma, or it might be asthma and not a serious condition. So can you briefly, since we have some time left, so Yep. can you briefly enlighten us on that? Okay. So this is a good question, and I actually wanted to avoid this because it's a very tough question. I'll tell you why. There is, as I said, there are certain features which suggest yes, this is asthma. There are certain features which suggest this is COPD, but both of them are obstructive ventilatory defect. And pehle there was an understanding which said that asthma is always reversible, but now we have realized it is not always so. And many people said COPD is irreversible. If it was irreversible, why was it treated with bronchodilators? So we have now realized that there is something, as in fact, a term that has come up is ACO, asthma COPD overlap. And there are times when it is very difficult to differentiate between the two conditions, but there are a few pointers. Now let's come to those pointers. If the patient has asthma, he will have an allergy phenotype, which means he may have rhinorrhea, he may have urticaria. Urticaria is when there are लाल धब्बे बन जाते हैं जिसमें खुजलियां बहुत होती हैं, and he may have certain other allergic features. Then usually there's a family history of it. The third thing that we often look for is it is usually, again, I'm not saying always, but usually it is at a younger age. Now let's come to COPD. COPD is mostly at the older age, about the age of 40. Another thing that with COPD is when you do a pulmonary function test, that is a Cook marker, we look at the capacities of the lung. We find out that we can see whether the patient has obstruction, which is reversible or irreversible. COPD is usually irreversible. The third thing about COPD is it is often seen in smokers. Because they will have some occupational exposure to a noxious compound. So, smoke can even be there at work. We have like if the person is a traffic policeman, I recently saw one. He says, "I have never smoked in my life." I was quite emphatic. I like, "नहीं, कुछ तो हुआ." And then he took his occupational history. He's exposed to so much of air pollution because of what his job is, standing in the streets every day. So that is one risk factor. So with these factors, we sort of try to separate an asthma versus an COPD. In addition, other than history, there we can look at the blood tests. If there is a lot of eosinophilia or the IgE levels are elevated, it hints towards an asthma phenotype rather than a COPD phenotype. Coming to your how about heart failure? And this is another thing, from med school, we've learned there is something known as cardiac wheeze. Cardiac wheeze is heart failure, maybe the wheezing आवाज जो मैंने निकाली, it can be heard. So how do you differentiate? If there is a patient has heart failure, left ventricular heart failure, he will often have pedal edema. पैर में सूजन होगी, but COPD में भी हो जाती है when they have right heart failure. The second thing that they will have is a condition, the breathlessness, जो सांस फूलती है, it is more on lying down. It sort of spreads and they're sitting propped up. This is known as, the term that we use is orthopnea. The other term that we use is PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. उसमें क्या होता है? The patient goes off to sleep. फिर एक दो घंटे बाद suddenly he gets up, gasping for breath, goes to a window, opens it up. That occurs 2 to 3 hours later after sleep onset. Whereas asthma के जो breathlessness होती है ना, it occurs in the early hours. So that will occur somewhere around, say the patient is supposed to wake up at 6, it will occur somewhere around 4. Whereas जो PND है, paroxysmal nocturnal dyspnea, जो heart failure में देखा जाता है, it is usually that he will have worse breathlessness a few hours after sleep. So he sleeps at 10 o'clock, around 12 midnight he's going to wake up gasping for air. These are rough features with history that we can differentiate. Again, with blood tests and echocardiography, we are more confident. And with pulmonary function tests, we are more confident. So since this is addressing mostly beneficiaries who are not doctors, अगर आपको doubt है, go to your doctor. He will take a history. वो आपसे कुछ सवाल पूछ के, they will get an idea of how to differentiate the two, and he will order investigations if there's still confusion there. Yeah, thank you, Dr. Rohit. So as Dr. Rohit rightly said, that there are other conditions which might be a little more serious and would perhaps uh, involve treatment of more than just the lungs. So it is best that if your symptoms are persistent or not getting better with your usual medication, you should try and
consult your doctor who has been treating you, or contact your wellness center. And in CGHS, all these facilities are available. Inhalers are given, as you know already, to everyone who requires them. Nothing is in short supply. And even if people require other medications and machineries and things to support their existence and well-being, like BiPAPs and continuous pressure monitors, CGHS does have a modality to supply to them, provided they require, their condition requires them to use it. CGHS and Government of India have, in their bid to clean the air, the government has an Environment Protection Act, the Forest Conservation Act, the Wildlife Protection Act, and the Water Prevention and Control of Pollution Act, along with the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So the government is very clear in its will to provide clean air. All we have to do is make up our minds, do our bit as citizens to stop self-inflicted damage to our own selves and the environment, so that for posterity we hand over a better, cleaner, at least similar air, if not better. So we must try to, as Dr. Rohit suggested, we must try to do our bit as much as we can to preserve clean air, preserve our health, and preserve and to deter any ill effects of environmental pollution that are that might happen to us if we act irresponsibly. And asthma is very well controllable, provided you are aware, you are alert, and you are taking your medications regularly. Medications do not make you dependent on them, but they only help you perform better. As he said, like a very relevant example of the spectacles. Likewise, the patient takes the inhaler not because it gets addicted to it, just because it is a very good way of relieving his symptoms. So he needs it and he uses it and he continues to use it because it makes him feel better and relieved of his symptoms. However, there is a correct way of taking the inhaler, which I'm sure Dr. Rohit will, I think we have time. Dr. Rohit, would you like to briefly talk about that as well? Okay, so inhaled therapy is actually a very is evolving. We are understanding more and more about it in the last few days. So there are different types of inhalers. First of all, let's get to that. There is something known as a dry powder inhaler, DPI, and there's something known as a PMDI. PMDI is pressurized metered dose inhaler. So some of the inhalers that I showed were MDIs, the typical one, puff जिससे निकलता है. With a dry powder inhaler, there are multi-dose or single-dose inhalers. What it essentially means is like your typical that we used to see was the rota cap. So you used to put that in a device and करके उसको खींचते थे. And once you do that, the particles break into very very fine particles, and then they get inhaled. And as the air is going in, they get sucked into and they reach the airway. The other way is a pressurized MDI. Now, pressurized MDI, the idea is it has, earlier they used to have CFCs, but with good air, we have now HFA, hydrofluoroalkanes. And HFA wale jo inhaler, you puff them out, then a jet comes out, it just comes out from the device and then it is inhaled in. So इसमें ज़्यादा effort नहीं लगाना पड़ता, but you have to make sure that you're coordinating it very well. And if you're not able to coordinate it, there are certain spacers that are available. Now, do realize there is a steps for it, and there are if you do not take it right, the drug will not reach the target site. What I'm trying to say is, अगर आपने ठीक से नहीं लिया, it will go, हम चाहते हैं कि it goes along the airway and sticks to the airway, and there it has its action. But अगर वो वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो वो काम नहीं करेगा. Now, what often ideal तरीका क्या है कि अगर आप canister दबा रहे हो, you press it and inhale at the same time. This requires a lot of coordination, by the way. And कई बारी osteoarthritis वाले patients ऐसे नहीं ले पाते. But anyway, दबाते हैं, inhale करना है, and the दवाई has to go in. Now क्या किया, अगर आपने दबाते वक्त inhale नहीं किया, वो सारा गले में जाके चिपक जाएगा. या
आप एक्सेल कर रहे हो, विच मीन्स आप सांस बाहर निकाल रहे हो और दबा रहे हो, तो दवाई अंदर ही नहीं जाने वाली. या अनदर कॉमन मिस्टेक दैट many people make is uh, we have कैनिस्टर में दवाई एक प्रोपेलेंट के साथ मिक्स्ड होती है, तो उसको हिला के, कैनिस्टर को आधे मिनट हिला के दवाई को डिसॉल्व करके फिर दबाना होता है, एंड तब वो दवाई निकले. अदरवाइज एज दे से सिर्फ गैस गैस निकलेगी, परफ्यूम भी नहीं निकलेगा. सो समथिंग अकिन टू दैट. सिर्फ सिर्फ प्रोपेलेंट निकलेगा, दवाई नहीं निकलेगी अगर आपने कैनिस्टर को हिलाया नहीं है. So many people who have an asthma attack, they panic so much, they immediately open the thing and they start taking it in. कुछ नहीं, सिर्फ गैस अंदर जा रही है, सिर्फ प्रोपेलेंट अंदर जा रहा है, the drug is not going in. So shaking the canister is a very important step which many people forget to do. So there are a couple of things. In fact, I have worked in our department. We have a TV outside. यहाँ पे we play these videos. And the same, if you ever come to the CGHS department in Safdarjung Hospital, there are TVs जहाँ पे ये play किया जाता है कि how to take an inhaler. Busy practice में कभी कभी people avoid it. They are unable. They forget to tell the patient this. But if you ask your doctor, he'll train you very well, and you will see कि एक बारी ठीक तरीके से लोगे तो works well. Another advice that I have for many people who are taking inhalers, आप YouTube, use the internet revolution. आप YouTube में जाओगे, there are multiple videos available which tell you how to use your MDI, how to use your MDI with spacer, or how to use your dry powder inhaler. So just in case, अगर आपको नहीं भी बताया, this is where you can teach yourself and use the internet technology to your advantage. Thank you, Dr. Rohit. Very nicely put. Everyone has access to, who's listening to the webinar has access to internet. I'm sure that's why they are listening to the webinar. इसलिए आप सुन पा रहे हैं हमारे वेबिनार को, हमारी मीटिंग को. तो आप YouTube या इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिक्टोरल फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप अपने आप को, अगर या आपके जानकार या आपके निकट संबंधी कोई ले रहा है इनहेलर, if somebody is using it known to you, who is not using, you think is not using correctly, you can just help him use it correctly. There's a very relevant question that has come up in the chat box. Someone in the audience wants to know whether polysomnography with CPAP titration is available in Safdarjung. I'm sure Dr. Yes. Rohit is the best person to answer. However, if before, yeah, Dr. Rohit, please. The test is available. We are doing it. Because of the ongoing COVID pandemic, last year the services were halted for a while, but now we are up and running, and our department has been doing this. And in case this gentleman finds it difficult to get a time, because it's Delhi, Safdarjung Hospital caters to the entire Delhi and NCR, and one of the few pioneer institutions to provide multi-speciality services free of cost to one and all. So if one finds it difficult to, CGHS beneficiary finds it difficult to get a time in reasonable time frame, and there is a long waiting, you can get it prescribed, and there are empaneled centers where your CGHS offers, your wellness center will endorse and will make sure that you get the test that you need it in time. So you will be free to visit any empaneled center for the test that you require. All you got to do is visit a government specialist, and in case they think that in your condition it is required, you don't need any further endorsement if it is a government specialist. And if you go to a empaneled center and the treating physician there thinks it is required, then the wellness center team will do the needful. So CGHS has a solution for every condition. We try to find a workaround, and I'm sure Dr. Rohit, your talk has been really informative and educational. Thank you for your time. Thank you, everybody. In another fortnight, we'll be up with another very interesting, relevant topic. Till then, take care, stay safe, stay healthy, and let's do our bit to keep the environment clean. Let's be positive. Vaccines are out. Vaccines are not dangerous. Side effects of vaccine the side effects of the disease are more than side effects of the vaccine. So get yourself vaccinated. Don't hesitate. And see you after 15 days. Thank you.
Thank you, Dr. Rohit, and thank you, audience, for your time. Wonderful. Thank you.